Pranam, warm regards and a very good morning. On behalf of the High Court of Orissa, we extend our warm greetings to the President of India on this momentous occasion for the valedictory ceremony of the 75th year of the High Court of Orissa. It's a great honor and privilege to have the august presence of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. We are also privileged to have amongst us the Honorable Governor of Odisha, Professor Ganeshi Lal, Dr. Justice S. Murlidhar, Chief Justice, High Court of Orissa, Justice Subhashish Talapatra, Judge, High Court of Orissa, Shri Jagannath Sarka, Minister of Law, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, Government of Odisha, Shri Ashok Parija, Advocate General Odisha, and Shri Dharanidhara Naik, President, High Court Bar Association on the dais. इंडोर स्टेडियम के इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे सभी न्यायाधीशों, पूर्वतन न्यायाधीशों, श्रद्धास्पद गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं. Today is an auspicious day in the history of High Court of Orissa. On this momentous occasion, may I now humbly request Dr. Justice S. Murlidhar, Chief Justice, High Court of Orissa, to kindly present his welcome address to the august gathering. Pranam, Vande Utkala Janani. A very warm good morning to everyone present. It gives me great pleasure to welcome in our midst our beloved President of India, Honorable Srimati Draupadi Murmu. Today, the High Court of Orissa completes the 75th year of its existence as a constitutional authority, delivering justice to the people of Odisha. By gracing this very special occasion with her presence, the first citizen and the proud daughter of Odisha has gladdened the hearts of every one of the judges, past and present, the judicial officers, the lawyers, the law clerks, employees, and the entire judicial fraternity present here, and those watching the live stream. What can be more befitting for this historic moment than to have the holder of the highest constitutional office and as the executive head and the appointing authority of each of the judges of the Supreme Court and the High Courts preside over this function. Madam President, you are an inspiration to the crores of your fellow citizens and millions of Odias by your life's own work and experience, which has witnessed many a challenge which you have overcome with great inner strength and grace. May I, with your kind permission, congratulate you on successful completion of 1 year of holding the highest office in the country. The High Court of Orissa is grateful to you for having very kindly agreed to be the chief guest and deliver the keynote address on this momentous occasion. This is a moment to cherish for each one of us. On behalf of the High Court of Orissa, I extend a hearty welcome to our beloved Governor, Honorable Professor Ganeshi Lal ji. His presence on this very important event in the history of the judiciary in Odisha signifies the immense regard in which he holds the High Court. Only in February this year, the Honorable Governor was kind enough to inaugurate the Museum of Justice, and his inspiring words on that occasion have been a great source of strength and encouragement to us. We are privileged, sir, to have you participate in this function. We happily welcome Shri Jagannath Sarka, Honorable Minister of Law, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, Government of Odisha, who has been requested by the Honorable Chief Minister of Odisha to represent him on this occasion. Indeed, sir, we are honored to have you in our midst. In the evolution and growth of the High Court of Odisha, many of its stalwart judges and lawyers have played a significant role. Representing the bar in Odisha, we have with us on the dais Shri Ashok Parija, the learned Advocate General of Odisha, who is its senior most law officer, and Shri Dharanidhar Naik, learned Senior Advocate and President of the Orissa High Court Bar Association. I warmly welcome this on this occasion on behalf of the High Court of Orissa. On this important occasion, I welcome my colleague judges and their spouses, former judges of the High Court of Odisha, learned senior advocates and members of the bar, Chief Secretary, Government of Odisha, and the officers of the government present here. Officers of the President's Secretariat, New Delhi, and the Governor's Secretariat, Director General of Police, Commissioner of Police and other police officials, the Chief Postmaster General, Odisha Circle,
and all officers from the Department of Posts, the Collector Cuttack, the judicial officers, officers of the High Court Registry led by the Registrar General, officials and representatives of the print and electronic media, and all ladies and gentlemen present. The High Court's judicial history commenced in 1916 when the Circuit Bench of the Patna High Court began holding its sittings in Cuttack. Even before the Constitution of India could be formally brought into force, the Orissa High Court Order 1948 was published on 30th April 1948. The first 4 judges of the High Court of Orissa, including the first Chief Justice, Shri Birakishore Rai, took their oaths of office on 26 July 1948. It was a historic moment. The pendency then was around 2,000 cases. In 1978, the sanction strength of the judges rose to 8. The number of pending cases rose to 7,057. In 2022, this High Court had a working strength of 24 judges, the highest ever in its history. In 2022, the High Court disposed of 1,36,599 cases and delivered 2,118 judgments. The district judiciary, with a current strength of 808 judges, disposed of in 2022 5,15,392 cases and delivered 1,61,263 judgments. The High Court of Orissa has been in the forefront as regards the adaptation of technology to improve access to justice. In the last 2 years, each of the branches, both judicial and non-judicial in the High Court, have been refurbished with an entirely new ambience and decor. In the High Court today, on the administrative side, the non-judicial branches and the Chief Justice's Secretariat are all paperless with the adoption of the Odisha Judicial Workflow Automation System. Other measures include opening of vulnerable witness deposition centers in every one of the 30 districts, virtual courts of the High Court in 20 districts, introduction of paperless courts in the High Court and the district courts, e-filing, provision of e-libraries for district court lawyers, and many such measures. Through all these measures, the judiciary in Odisha is witnessing a transformation in a positive way and creating a working atmosphere that incentivizes higher productivity of the judges and staff, both in the High Court and the district courts. The complete cooperation and assistance, both in terms of provision of infrastructure and finance by the state government, has contributed to this in no small measure. Odisha is perhaps the only state to have an exclusive judicial infrastructure management agency. In the 75th year of the High Court, we've been able to launch new projects and schemes, hold 2 national conferences, one on digitization and paperless courts and the other on judicial history, and hold a number of events, including those involving former judges whom we honored in this very venue on 8th April of this year, lawyers, law clerks, our staff, our judicial officers, and law students. Today's is the fitting finale of the 75th year celebration of the Odisha High Court. The institution is moving ahead, strengthened by the confidence that the coming generation of judges and lawyers are committed to carrying forward the constitutional vision of delivering fair and equal justice to the people of Odisha. Madam President, the High Court is aware that issues of justice to the poor and the marginalized are close to your heart. On behalf of the High Court and the District Judiciary, we assure you that we will make every effort to reduce the waiting time of litigants, especially the poor and vulnerable ones, in the Court of Justice. The High Court is a people's institution and is committed to delivering on the constitutional promise of justice to the people of Odisha without fear or favor, affection or ill will. I shall not take much more time, but before I conclude, I want to say, Mahamihim Bharatra Rashtrapati Mahodaya, Manebar Rajyapal Odisha, Manebar Mantri, Ebang Ethare Upasthit Tibha, Samasta Atithi, Bhai O Bhavano Mananku, Mu Odisha Ucha Nyayalaya Tarafru, Ehi Shubha Abasarare, Hardik O Hridayara, Swagata Janauchi, Ebang Ashesh Dhanyabad Dauchi. Jai Hind.
Thank you, sir, for the warm welcome extended to our guests. As a token of our reverence and gratitude, may I now request Dr. Justice S. Muralidhar, Chief Justice, High Court of Orissa, to kindly present a shawl and a memento to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. केतेक रोग एपर्यंत ठिकणा भाव चिन्हट सुधा हो पारि ना तेणु ए सबु पई गवेषणा ही एकमात्र माध्यम तुम मानक मध्य जो मानकर गवेषणा रे रुचि अच्छी से माने उच्चतर गवेषणा रे मनोनिवेश करवा निश्चित भाव उचित रोगी पई औषध प्रेस्क्रिप्शन करवा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण औषध बाहर करवा मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण मु आशा करुछि जदि तुम मैंने निरंतर गवेषणा करिवो ताहेले चिकित्सा विज्ञान रो नुआ दिग दिगंत उन्मोचित होई पारिबो तुम मध्य नोबेल प्राइज पाई पारिबो एहा द्वारा पृथ्वी रे भारतीय चिकित्सा विज्ञानी मानकर एक नुआ परिचय सृष्टि हेबो छात्र छात्रीगण भारत अमृत काल रे प्रवेश करि सारिछि आगामी प्राय 25 वर्ष पाई आम निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण 2047 मसीह भारत स्वाधीनतार शतवार्षिक पालन कर आमर लक्ष्य सेते बेलू आम देश एक पूर्ण विकसित राष्ट्र रे रूपांतरित होइथिबो आपण माने समस्ते मिलमिशि भारतवासी को जे सुस्थ रखिबे एवं भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र हेबार स्वप्न को सार्थक करिवो एई आशा पोषण करी छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्यत अनुष्ठान अभिवृद्धि एवं आपण मानकर सुखर समृद्धि कामना करी एवं दुख को दूर करी आपण माने आगे आगे चलिए ए विश्वास रखी मु मोर वक्तव्य सांग करछि वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी। I thank Honorable President of India for her address. Ladies and gentlemen, may I now request everyone to kindly rise for the national anthem. प्रसन्नजीत महांती जी महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका डॉक्टर नर्स तथा अन्यान्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद श्रद्धेय छात्र छात्रीगण पुरातन छात्र छात्रीगण उपस्थित जनप्रतिनिधिगण सजन मंडली समस्त को नमस्कार जोहार। श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वार्षिकोत्सव औरोरा 2023 रे योगदान करी मु विशेष आनंदित यही अवसर से एक स्मरणिका उन्मोचित होगा मध्य आनंदर कथा एथिपाई मु आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी। यह पूर्वर आज ओडिशा हाईकोर्टर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित उद्यापनी उत्सव में मु जोग देछि। कटकर प्रसिद्ध पाई ओडिशा उच्च न्यायालय रेभेन्सा विश्वविद्यालय एवं एससीबी मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण अवदान रही मु जानिबा को पाइली जे मराठा राज्यस्थ समय रे एही स्थान रे गोटे पिलग्रिम हॉस्पिटल थिला कहा जाए हॉस्पिटलटी मुख्यतः रथयात्रा पाई पुरी जाउथिबा तीर्थयात्री मानकर आशु चिकित्सा निमंते उद्दिष्ट थिला। ब्रिटिश समय रे यह ओडिशा मेडिकल स्कूल एवं परवर्ती समय रे ओडिशा मेडिकल कॉलेज रे परिणत होइथिला। मु जानी खुशी हेली जे एही मेडिकल कॉलेज रो प्रतिष्ठा क्षेत्र रे उत्कलर बरपुत्र उत्कल सम्मेलन प्रथम सभापति मयूरभंज दानवीर महाराज श्री रामचंद्र भंज देवंकर अवदान थिला अतुलनीय। सेतिपाई स्वाधीनता परे श्री रामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय भारे यही अनुष्ठान पुनर्नामित हैला। ये अवसर में स्वर्गत महाराजा प्रति मु गभीर श्रद्धांजलि एवं भक्तिपूत अर्पण करुछि। अध्यापक अध्यापिका वृंद चिकित्सकगण छात्र छात्रीगण एक छोट पिलग्रिम हॉस्पिटल आरंभ हो आज भारतर अन्यतम अग्रणी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे परिणत होइछि।
ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ରୋଗୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହା ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିବିଧତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦେଶ ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀର ସୁପରିଚିତ। ମୋର ତ ମନେ ହେଉଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟିଏ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜି ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଛ, କାଲି ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ବାହାରିବ। ମୋ ବିଚାରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ରତ। ମାଆମାନେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବି ବହୁବାର କହିଛି, ଡକ୍ଟର, ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ଲୟାର ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେବା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲେ, ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଥିଲେ ବା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ତ ନଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବନି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଠରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନର ସେବାକୁ ନାରାୟଣ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ଶାସକ, ପ୍ରଶାସକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଧ୍ୟାପକ ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନ ତହଂ କାମେୟ ରାଜ୍ୟଂ ନ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନା ପୁନର୍ଭବଂ କାମେୟ ଦୁଃଖତ ତାନି ପ୍ରାଣନାଂ ଆର୍ତ୍ତନାଶନମ୍। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଡାକ୍ତର ହେବ, ଏହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଶନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେ କୌଣସି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ସମାଜ ଗଠନର ଆଧାରଶିଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଆୟୁ ଥିଲା ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଆୟୁ 70 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧନାର ହିଁ ଫଳ। ଦେଶରେ ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକ ଅଜଣା ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଆଜି ଅକସ୍ମାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 ବିଜ୍ଞାନ
विकसित विश्व को दोहलाई देला। महामारी भयंकर रूप ये पृथ्वी देखिला, किंतु मु धन्य कहबी भारतर चिकित्सक वृंद एवं चिकित्सा सहित संपृक्त कर्मचारी मान निज जीवन को एवं निज परिवार को उपेक्षा करी आपण माने जेपरी अन्य मानकर जीवन रक्षा करिया को आगे आसिले ताहा वास्तविक अति प्रशंसनीय। चिकित्सा सहित आपण मानकर गवेषणा मध्य समांतराल भाव में चलिला। फल भारत निजर ज्ञान कौशल वैक्सीन तैयारी करिया को सक्षम है। आमे समस्ते जानिछंती भारत वर्तमान सुधा 2220 कोटी रु अधिक डोजेस ऑफ वैक्सीन दे पारी, जहाँ एक विश्व रेकर्ड हो पारी। देशवासी को टीका देवा सहित पृथ्वीर 100 रु अधिक देश को भारत टीका पठाई। विश्व चकित है जे भारत परी एक विशाल विकासशील देश राष्ट्र कोविड-19 को एत सफलतार सहित मुकाबला किपरि कला। ये क्षेत्र में भारत सरकार निष्ठा मार्गदर्शन निश्चय प्रशंसनीय। महामारी सामना करने दिगरे चिकित्सक कूलर अग्रणी भूमिका रही। स्वास्थ्य सेवा सहित जड़ित नर्स एवं पारामेडिकल स्टाफ मानकर भूमिका मध्य उणा नुहे। तेणु डाक्तर भावी डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी माने जेते प्रशंसा कले भी ये यथेष्ट हेब नहीं। भारतर अनुभवी नेतृत्व महामारी सामना करने संगे संगे देश को अर्थनैतिक विपर्यय मध्य रक्षा कर पारी। भारत आज विश्वर 5म बृहत अर्थनीति भाव में उभा होइछि एवं यह 3य बृहत अर्थनीति रे परिणत हेबा बोली आशा करा जाउछि। वर्तमान भारत प्रति विश्ववासी दृष्टिभंगी बदली जाइछि। आम देश अधुना विश्व समस्या समाधान दिगरे अग्रणी नेतृत्व नेउछि। यह आम समस्तंक पई एक गौरवर विषय। यह द्वारा आम युवपीढ़ी निज भितर एक आत्मबल खोजी पाइछि एवं निज देश और निज संस्कृति उपर अदम्य आस्था प्रकट करुछि। छात्र छात्रीगण मु आशा करुछि आग अपेक्षा निज उपर तुमମାନଙ୍କର आस्था निश्चय भाव में बहुत परिमाण में बढ़ी जाइछि। मु जानी खुशी हेली जे ए अनुष्ठान और पुरातन छात्र छात्री माने निज निजर क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करी केवल भारत कहीं पृथ्वीर विभिन्न देश में स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा संगे संगे देशर सुनाम को बहुगुण वृद्धि करछन्ति। देशज विज्ञान क्षेत्र को उल्लेखनीय अवदान पाई यही अनुसार केतेक सुनामधन्य पुरातन छात्र छात्री पद्मभूषण पद्मश्री डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एवं सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार भली सम्मानजनक पुरस्कार लाभ करी यही अनुष्ठान गौरव बढ़ाई। तेणु मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। छात्र छात्रीगण मु आशा करुछि ए अनुसार प्राक्तन छात्र छात्री मानकर निस्वार्थपर सेवा एवं आदर्श रे अनुप्राणित होई तुम मध्य मानव सेवारे निजको नियोजित करिवो एवं देश पाई सुनाम अर्जन करिवो। छात्र छात्रीगण रोगी सेवा परी मेडिकल साइंस रे उच्चतर गवेषणा मध्य गुरुत्वपूर्ण। मेडिकल साइंस रो अनेक दिग अन आलोचित ही रही से सब क्षेत्र में गवेषणा जरूरी। केतेक रोगर औषध एवं मध्य बाहरी पारि नाही। एपरिकी केतेक रोग एपर्यंत ठिकणा भाव चिन्हट सुद्धा हो पारि नाही। तेणु ए सबु पाई गवेषणा ही एकमात्र माध्यम। तुम मानक मध्य जो मानकर गवेषणा रे रुचि अछि से माने उच्चतर गवेषणा रे मनोनिवेश करवा निश्चित भाव उचित। रोगी पाई औषध प्रेस्क्रिप्शन करवा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण औषध बाहर करवा मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। मु आशा करुछि जदि तुम मैंने निरंतर गवेषणा करिवो ताहेले चिकित्सा विज्ञान रो नुआ दिग दिगंत उन्मोचित होई पारिबो। तुम मध्य नोबेल प्राइज पाई पारिबो। एहा द्वारा पृथ्वी रे भारतीय चिकित्सा विज्ञानी मानकर एक नुआ परिचय सृष्टि हेबो। छात्र छात्रीगण भारत अमृत काल रे प्रवेश कर सारी।
आगामी प्राय 25 वर्ष आम निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण 2047 मसीह भारत स्वाधीनतार शतवार्षिक पालन कर आमर लक्ष्य सेते बेलू आम देश एक पूर्ण विकसित राष्ट्र रे रूपांतरित होइथिबो। आपण माने समस्ते मिलमिशि भारतवासी को जे सुस्थ रखिबे एवं भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र हेबार स्वप्न को सार्थक करिवो एई आशा पोषण करी छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्यत अनुष्ठानर अभिवृद्धि एवं आपण मानकर दुख सुखर समृद्धि कामना करी एवं दुख को दूर करी आपण माने आगे आगे चलिए ए विश्वास रखी मु मोर वक्तव्य सांग करछि। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी। I thank Honorable President and grace. It was a Now is the time for release of the souvenir of the High Court of Orissa. I would now request Dr. Justice S. Muralidhar, Chief Justice, High Court of Orissa, to kindly present the first copy of the souvenir to the Honorable President of India. I would also request other dignitaries on the dais to join with Honorable President Madam for release of the souvenir. The souvenir celebrating the 75 glorious years of the establishment of the High Court of Orissa contains messages from the Honorable President of India, Honorable Prime Minister of India, Honorable Governor of Odisha, Honorable Chief Justice of India, Honorable Minister of State for Law and Justice. Now, I would like to request Shri Subhendu Swai, Chief Postmaster General, Odisha Circle, to come to the dais and present the first album to the Honorable Governor of Odisha for release and to hand over the first album to the Honorable President. I would also request the Honorable Governor of Odisha and other dignitaries on the dais to join with Honorable President Madam for releasing of the commemorative postage stamp. The commemorative postage stamp encapsulates the very essence of justice and the profound impact the High Court has had on the lives of the countless individuals. High Court of Orissa is the 9th High Court in India for which the commemorative postage stamp has been released. It is the 7th institutional building in Odisha for which the commemorative postage stamp has been issued. High Court of Orissa expresses its sincere thanks to the Department of Posts for releasing the commemorative postage stamp on this occasion. Thank you. May we now request Shri Jagannath Saraka, Honorable Minister of Law, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, Government of Orissa, to kindly address the gathering. Sir. समस्त को मोर नमस्कार। आज अनुष्ठित होता उच्च न्यायालय 75तम प्रतिष्ठा दिवस समारोह उद्यापन अवसर आम गहन उपस्थित थिबा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महाशया, माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालय मान्यवर मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर महोदय एवं मंच उपस्थित मान्यवर विचारपतिगण, उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित अतिथि, प्रेस मीडिया बंधुगण, समस्त को मु आज यही समावेश अभिनंदन एवं स्वागत जनाऊँ। 1948 मसीहा जुलाई 24 तारिख में प्रतिष्ठित ओडिशा हाईकोर्टर आम राज्यर न्यायिक व्यवस्था को अनेक परिवर्तन आनी पारी। साधारण जनता यह द्वारा बहु मात्रा उपकृत होती। न्याय प्रदान क्षेत्र में मान्यवर ओडिशा हाईकोर्टर गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। आमे भारतवासी विशेष भाव गर्वित कि
आम गणतंत्र समयक्रमे मजबूत एवं अधिक सफल होइछि। एथिपाई व्यवस्थार प्रत्येक स्तंभर गुरुत्वपूर्ण योगदान रही। संविधान व्यवस्था अनुसार लोकसभा विधानसभा कार्यनिर्वाही एवं न्यायपालिका सर्वदा लोकंक कल्याण पाई उत्तरदायी। यही दायित्व निष्ठार सहित पालन करने हेउछि आमर प्रधान कर्तव्य। साधारण गरीब खटिकिया लोकों पाखरे ए समस्त व्यवस्था सुविधार अल्प समय एवं कम खर्च रे पहुँचाइबा आमर मूल लक्ष्य हेबा आवश्यक। आमे समस्ते जानती कि माननीय मुख्यमंत्री युक्त नवीन पट्टनायक बलिष्ठ नेतृत्व एवं दिग्दर्शन जो आम राज्य शिक्षा स्वास्थ्य कृषि गमनागमन अर्थनीति क्रीड़ा विपर्यय परिचालन इत्यादि क्षेत्र में अनेक विकास लाभ करिछि अन्य राज्य मानक पाई उदाहरण पाई। 5T आभिमुख्य जो प्रशासन गतिशील होइछि। ऑनलाइन माध्यम रे साधारण जनता घरे बसी अनेक सरकारी सेवा सुविधा पाई पारुछन्ति। खुशी विषय माननीय ओडिशा हाईकोर्ट वैश्विक ज्ञान व्यवहार करी ऑनलाइन माध्यम रे न्यायिक व्यवस्था को अधिक लोकंकर निकटतर हो पारि। आशा करी आज यही शुभ मुहूर्त माननीय हाईकोर्ट अधिक संस्कारमूलक पदक्षेप नेब जहाँफल न्यायिक व्यवस्था उपर साधारण जनता आस्था और विश्वास अतुट रसतु यही अवसर जो मैंने बहु श्रम साकार करी ओडिशा हाईकोर्टर प्रतिष्ठा निमंते उद्यम करते से आम आज सम्मान सहित स्मरण करवा। जो जगजन्म महापुरुष वो व्यक्ति विशेष ओडिशा हाईकोर्टर बार और बेंचर सुनाम अर्जन करी न्यायिक व्यवस्था को अधिक क्रियाशील कर प्रति विनम्र श्रद्धांजलि जनावछि एवं न्यायपालिका सहित जड़ित समस्त व्यक्ति को यही कार्यक्रम आयोजन कर धन्यवाद एवं समस्त को नमस्कार करी मोर वक्तव्य सांग करुछि। वंदे उत्कल। Thank you, sir. It is now with immense pleasure and gratitude we welcome the Honorable Governor of Odisha, Professor Ganesh Lal, to address the august audience. Sir. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मैंने महसूस किया कि हर नज़र जिनके दर्शन करने को ललायित है, उत्सुक है, प्रतीक्षारत है, ऐसे आदि शक्ति की संतान मेरे महान भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी इस युग को अपनी मुस्कान लुटाते फिर रहे ऐसे हमारे सबके प्रिय ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर जी, ऑनरेबल जज पात्रा जी, मेरे परम स्नेही मित्र, मेरी सरकार में मंत्री श्रीयुक्त जगन्नाथ जी, आदरणीय श्री अशोक परिजा जी, बार काउंसिल के ऑनरेबल प्रेसिडेंट, and you the manifestations of Chitraratha sitting before me, Ashwatthaya, Vrikshana, Devarishinam Janarada, Gandharvanam, Chitraratha, Siddhanam ka. You are the Chitraratha of this present land, you see, this planet, you see. I salute you with my folded hands, you see. Whatever I have learned from all of you, you see, all the doctrines which have been enshrined in the scriptures, maybe the New Testament, maybe Quran, maybe Gita, the Vedas, by the sages, the seers and the saints of the world at large, all the rules and the principles which have been so constituted in the constitution of the different countries, all the arrangements which have been so formulated in the judiciary, in the executive, in the legislature, etc., for a smooth interaction, for an absolute harmony
between man, nature, science, and God fall under the ambit of the rule of law. Now, this rule of law becomes a teasing illusion if it is not accessible to the people at large. It is also of a teasing nature, the different courts of the different laws. But more so, leaving aside all these things, when it becomes a selective principle of law, then there is nobody to save the planet, you see. So as far as the rule of law is concerned, that simply means performing the ordained duty as an entity in evolution, culminating in God as a superman, deciphering the mystery of creations, preservations, destructions, and helping us to accept the wise dictum that thy will be done. We are basically the servitors of the transcendence, you see. Transcendental servitors we are. And the maximum depends upon you see. SC Supreme Court is said to be the conscience keeper of the independent world, you see. The Constitution also recognizes the intrinsic relation between judicial administration and administration for justice also. But judicial administration becomes, if free, fair, speedy, then it becomes judicial justice administration, you see. The world at large, you see, is gripped with the selective principle of law. It happened in the times of Mahabharata also, say. Bhishma was a selective principle of law. He was devoted just to Hastinapur. Karna's rule of law was nothing else but Duryodhana. Dronacharya's rule of law was Ashwathama. And therefore all these persons may be having Ichha Mrityu Vardhan. They were murdered like anything, you see. Today also in the world, you see, people have their own laws, you see. Duryodhana was himself the law himself, you see. Now in this torn world, you see, conflicting world, you can say, there is one unique person, fortunately, that is the Prime Minister of India, who talks of one earth, one family, one future, one sun, one world, one guild, conscious-centric globalization, planet and human-centric globalization. The person who speaks very to the world at large, you see, ये मोहब्बत का समय है, प्रेम का समय है, युद्ध का समय नहीं है. So the rule of law must be observed by the world at large. That is what the Prime Minister is speaking time and again, you see. It is called in Bhagavad Gita Swadharam, you see. Also Lord Krishna speaks, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharat. Whenever there is a decline of righteous conduct, I manifest myself in every millennium to deliver the pious and to annihilate the miscreants, you see. That is what Lord Krishna speaks, you see, and that is what you are. You are the manifestation of Lord Prabhu Jagannatha. You will excuse me, you see. I of course, you see, hold you in high esteem, you see. You have been just dropped from Lord Jagannatha to this land, you see, to give his blessings, his advice and his suggestions and his verdict to the people at large, you see. Well, that is what, as far as rule of law is concerned, I pray to Lord Prabhu Jagannatha that this divine river of divine wisdom which is couched in you should flow the waters of nirvikarita, nishkamata, nityata, nirlobhata, nirmamata, nirlepata,
That flow must be there, you see, and that has been there. See, so we stand unique as far as judiciary is concerned in the whole of the world. My salutations to you. Vande Utkal Janani Bharat Mata ki jai. Thank you, sir. May I now request the Honorable President of India to kindly address us and guide us. माननीय राष्ट्रपति से विनम्र आग्रह कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद दें। मंचासीन ओडिशार राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधरन जी, ओडिशा सरकार आईन SC ST डेवलपमेंट लघु संख्या और पछुआ वर्ग कल्याण मंत्री श्री जगन्नाथ सरकार जी, ओडिशा हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस सुभाषिष तालपत्र जी, ओडिशा हाईकोर्टर विचारपतिगण, एडवोकेट जनरल श्री अशोक परिजा जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभापति श्री धरणीधर नायक जी, उपस्थित अधिवक्ता बंधुगण, विशिष्ट अतिथिगण, सजन मंडली, जय जगन्नाथ। आज भारत इतिहास एक स्मरणीय दिन, गौरवर दिन। आज कारगिल विजय दिवस अवसर में मु समस्त देशवासी तरफ वीर जवान मान प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं युद्ध रे आत्मबलिदान देथिबा अमर योद्धा मान प्रणाम करुछि, श्रद्धा सुमन अर्पण करुछि। भारत माता सेवारे आत्मबलिदान देथिबा समस्त सुपुत्र मान मध्य ओडिशार अनेक वीर जन्ममाटीर गौरव वृद्धि करिसेंति। सेमानक मध्य मेजर पद्मपाणी आचार्य को महावीर चक्र रे सम्मानित करा जायथिला। एही सेनानी मानक वीरगाथा देशवासी मानक पई सदा प्रेरणार स्रोत होई रहिबो। एहीपरि एक गौरवर दिन रे ओडिशा हाईकोर्ट रो स्थापना दिवस, ये अवसर में मु समस्त को नमस्कार करुछि, जुहार करुछि। ऐतिहासिक दुर्ग बारवाटी वीर रक्त पिंडे गढ़ा जार माटी मु तांको नमन करुछि। ऐतिहासिक बारवाटी दुर्ग को कोଳରେ धरिथिबा एही बालीयात्रा और तारकसी पई विश्व प्रसिद्ध लाभ करिथिबा सहसादी नगर कटक को मु प्रणाम करुछि एवं आपण मानक शुभेच्छा जणाउछि। कटक रे पहुंची प्रथमे मु शक्ति स्वरूपा माँ कटक चंडी को दर्शन करी राज्यवासी, देशवासी एवं विश्ववासी कल्याण पाई प्रार्थना करिछि। उत्कल गौरव मधुसूदन दास बासस्थान को जाई तांको प्रतिमूर्ति रे एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म स्थान को जाई तांको प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि देवार सौभाग्य मध्य लाभ करिछि। कटक नेताजी जन्मस्थली। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास एवं उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महता प्रमुखों कर्मस्थली भाव में सुपरिचित। यही कटक नगर आधुनिक ओडिशार इतिहास को नुआ मोड़ देछि। एहिठारे 1903 मसीह मधुबाबू आह्वान क्रमे उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होइथिला। सेही सम्मेलन माध्यम स्वतंत्र राज्य गठनर स्वप्न देखिथिला ओडिशावासी। 1921 मसीह गोपबंधु अनुरोध क्रमे महात्मा गांधी कटक आसी काठजोड़ी बाली रे विराट साधारण सभारे जोग देइथिले। तापर ठारू स्वाधीनता संग्राम ओडिशार पुरपल्ली को व्यापी जाइथिला। देश स्वाधीन होला परे सही वर्ष डिसेम्बर मासरे कटक रे गड़जात मिश्रण पाई गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर महताब सही प्रक्रियार प्रमुख कर्णधार थिले। यह भारत रे देशीय
राज्यଗୁଡ଼ିकर मिश्रण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पदक्षेप थिला। सजन मंडली, ओडिशा उच्च न्यायालय 75 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित उद्यापनी उत्सव में जोगदे मु बहुत खुशी। आज एठारे उच्च न्यायालय उपर आधारित स्मारक डाक टिकट उन्मोचित हैला। यह आम समस्तक पई आनंदर दिन एवं आनंदर कथा मध्य। एथिपाई भारत सरकार जोगाजोग मंत्रालय एवं एथि सहित संपृक्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। सेहीपरि उच्च न्यायालयर स्मरणिका उन्मोचित हेबा मध्य आनंदर कथा। I am delighted to be in your midst today. I am happy not only because the Odisha High Court is celebrating its 75th anniversary, but also due to the presence of the galaxy of legal luminaries and other eminent personalities. এই অবসরে ମୁଁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତିଗଣ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତିଗଣ, ଅଧିବକ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ସୁଖ୍ୟାତି ଓ ସୁନାମ ପଛରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, କର୍ମପ୍ରବଣତା ଓ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାପକତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। Ladies and gentlemen, as you all know, Odisha became a state on 1st April 1936. Prior to that, it was a part of Bengal Presidency and then a part of Bihar. Some parts of Odisha were also in Madras Presidency and central provinces. Accordingly, there was no separate High Court for Odisha. A circuit bench of Patna High Court had been functioning at Cuttack since 1916. The High Court of Odisha was established nearly 12 years after the formation of the state on this very day in 1948. The establishment of this High Court reflected the long-standing aspirations of the people of Odisha. मात्र 4 जन विचारपति को नहीं उच्च न्यायालय आरंभ होता। वर्तमान यार विचारपति संख्या बोधुए एक्जाक्टली मो पाखे जी इनफर्मेशन अच्छी 33 को वृद्धि पाई। यही उच्च न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करने जो 2 वर्ष मध्य विचाराधीन मामला संख्या 1/4 ह्रास पाई बोली मु जानिबा को पाइली। एथिपाई मु मुख्य विचारपति डॉक्टर न्यायमूर्ति एस मुरलीधर एवं तांको सतीर्थ मानक प्रशंसा करूँ, धन्यवाद देउछि। Ladies and gentlemen, any institution which does not change with time lags behind. I am told that the High Court of Odisha has endeavored to incorporate the technological advancement in the justice delivery system. I appreciate the initiatives of the High Court to streamline and accelerated just deliver system through several modern, innovative and technology-driven changes. स्थापित हेबाठारु आज पर्यंत 75 वर्षर सुदीर्घ यात्रा रे ओडिशा उच्च न्यायालयर अनेक उच्चस्तरीय मानक स्थापित करिछि। बाबू जगन्नाथ दास, रंगनाथ मिश्र, राधाचरण पट्टनायक, देवप्रिय महापात्र, गोपाल वल्लभ पट्टनायक, अरिजित पसायत, अनंग कुमार पट्टनायक और दीपक मिश्र परी यही हाईकोर्टर विचारपति माने सुप्रीम कोर्ट रे विचारपति भाव में नियुक्ति होइछन्ति। सेमानक मध्यरु केते जन भारतर प्रधान विचारपति पद अलंकृत मध्य करिछन्ति। ओडिशार अनेक आईन विशारदों मध्य सर्वभारतीय स्तर में आईन सेवा प्रति उल्लेखनीय अवदान रही। Ladies and gentlemen, the legal profession in India has stood the test of time. It has earned the trust and respect of the citizenry. It stands strong as one of the important pillars of the world's largest democracy.
everybody concerned with the legal professions should work together, expeditious trial and quick justice. This can set free those innocents who are languishing in jail on trivial charges. This is a subject close to my heart, and I have spoken about it on previous occasions also. In my long experience in public life, I have come across instances of people incarcerated for periods longer than the punishment stipulated for the crimes of which they were accused. Such delays are a major concern. Due to this, innocent persons lose their prime period of life. The victims lose the hope also, as they do not see the guilty facing the legal consciousness during their lifetime. I would therefore exhort all those connected with Odisha High Court to work towards speedy dispensation of justice and set an example for the entire country. सजन मंडली, प्राकृतिक विपर्यय मनुष्य जाति आह्वान आगरे एक आह्वान। प्रकृतिर कोप यार कारण हो पारे। प्रकृति अनुकूल जीवन यात्रा समयर दाबी। भारतीय मुनि ऋषि माने माटी नदी प्रकृति को माँ मणुले सेमानक दृष्टि केवल पशुपक्षी कीटपतंग गछलता प्राणवंत नुहंती पहाड़ पर्वत नद नदी मध्य जीवंत। मु आदिवासी झील भाव में पिला बेलू पिला आदिवासी जीवन यात्रा को देखी आसुची। मु उपलब्धि करिछि जे प्रकृति सहित मिलमिशि चलिबा आदिवासी जीवन शैली निरंतर ये जीवन जापनर माध्यम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित न्यायपालिका मध्य परिवेश तथा वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देवा उचित। आमे आमर उत्तर पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देवा को हेले परिवेश सुरक्षा प्रति निरंतर ध्यान देवा आवश्यक रही। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि अनग्रसर लोकों को न्याय प्रदान करने उपरे आम संविधान निर्माता माने प्राथमिकता दे आसिछन्ति। समाज रे वंचित वर्गर लोक माने कोर्ट कचेरी और आईन कानून विषय विशेष सचेतन नुहंती। निज अधिकार पाई न्यायालय पाखरे पहुँचवा निमंते अनेकंकर सामर्थ्य भी न थाए। वंचित वर्ग को किपरि सुविधार न्याय प्रदान करा जाई पारे एक कथा आम समस्तंकर कर्तव्य हेबा उचित। ए विषय रे मानस मंथन करा जिबा उचित। विभिन्न कर्तृपक्षों द्वारा यही वर्ग को फ्री लीगल एड जोगाई देवा निमंते पदक्षेप निया जाउथिबा जानी मु खुशी हेली। अनेक आईजीबी मध्य बिना मूल्य रे आईन परामर्श देवा पई आगभर हेउछन्ति। एहा द्वारा साधारण लोक सहजरे न्याय पाइबे बोली मु आशा पोषण करुछि। सजन मंडली, जातिर जनक महात्मा गांधी आमान को गोटे कवच देइथिले। से कथा आमे माने समस्ते जाने। ताकू गांधीस टेलिस्मैन बोली कहा जाए। से विषय रे मु आपण माने समस्ते जानती मु केवल मने पके देउछि। एंड आई कट recall the face of the poorest and the weakest men whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use of him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? Uncut. मु आशा करुछि आपण माने न्याय प्रदान कला बेले न्यायर आधार निरपेक्षता को अक्षुण्ण रखा संगे संगे महात्मा गांधी प्रदत्त कवच कथा निश्चित भाव मन पकेबे। मु आशा पोषण करुछि एवं आपण मान को पुनर्बार शुभेच्छा जणाई मु मोर वक्तव्य सांग करुछि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी।
कोटिश्य धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय आपके प्रेरणादायी शब्दों और आशीर्वाद के लिए. Now we proceed to the end of the program. May I now request my Lord Honorable Mr. Justice Subhashish Talapatra, Judge High Court of Orissa and Chairman IT and AI Committee to kindly present the vote of thanks. I know the entire stadium is electrified hearing the Honorable the President of India. And I stand up just to salute her for such a wonderful, brilliant and thought-provoking speech. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, Honorable Governor of Orissa, Professor Ganeshi Lal, our dear Chief Justice, Dr. Justice S. Muralidhar, Honorable Member of Law, Mr. Saraka, Honorable Advocate General Mr. Ashok Parija, and the Captain of the Bar, Mr. Dharanidhar Naik, the President of the High Court Bar Association, my esteemed colleagues, my brothers and sisters, respected former judges of this High Court, the senior advocates, and heart of the Orissa High Court, the young lawyers, those who will construct the futures of this High Court. Central Postmaster General Orissa Circle, Sri Shubhendu Swain, the learned law officers and members of the High Court Bar Association in particular, government officials, and the officials of the Postal Department, Registrar General, registrars, and my dear employees of the Orissa High Court, ladies and gentlemen, as our Chief Justice mentioned, it's a finale. It's a finale of celebration. As we cross the 75 years, it's a milestone, and it's also a beginning of the further journey to the future. High Court requires nourishment from all its stakeholders. High Court is not the High Court of the judges. High Court not alone the High Court of the lawyers. High Court not alone the High Court of its officers and employees. High Court is for the people of Orissa. That should be ingrained in our memory, and when we look at the future. Honorable President was just reminding us our fundamental duties and very mindfully reminding us where we are failing. I remember her speech in the Constitutional Day she delivered in Delhi regarding these under trial prisoners languishing in jail. It's a huge challenge for the judiciary. But respected member, we can assure you in Orissa, through the legal aid system, we are now maintaining jail clinics in every jail of the Orissa, and through the legal aid lawyers, these persons who are not getting bail, we are taking special care of them so that they can get the bail. And you have mentioned, I am grateful for that, that people who doesn't know their right, it is our collective duty. It is not only the duty of the judiciary. Since we live in a democracy, we must learn to live with the citizen, fellow citizen, who doesn't have the minimum knowledge of their right. It is our duty as a collective to impart them the knowledge of that right, and whenever their right is pervaded or invaded, to stand up just their side. I am grateful to the Honorable Governor, Mr. Ganeshi Lal. It was always a pleasure to hear him. He has the multifaceted genius, philosophy, politics, even to the extent of the law. Sometime hear
a rancor in his voice. But sir, I can assure you this rancor energizes her to do much better performance. I come from small northeastern states. I lived from my childhood with my tribal brethren. I know the disadvantage, but I see the new aspiration has been generated when Madam Draupadi Murmu acquired the highest office of this country. That we can also achieve. This is a dream spread over the country. I was a judge in Arunachal Pradesh. Professor Ganeshilal has talked about the rule of law. That is the bedrock of the democracy. I talk about the rule of law is not to be guarded. Rule of law that should be nurtured by the democracy, nurtured by its citizenry. I give you one simple example. I was holding a meeting of the Commissioner of Itanagar. He was telling me one experience because he was from outside. That, sir, I was taken aback noticing one certain thing against a person belonging to a small tribal group called Adi in Arunachal Pradesh. Police registered a case. Entire community, believe me, he was telling me, came with that person to the police station so that he surrendered to the police. That is the responsibility of the rule of law. Perhaps more advanced societies are failing in this responsibility. That is why sometimes we do not find the justice is done in time. Our President has stated very categorically the judiciary must listen the small voices of the margin. Judiciary shoulders are not that strong, but believe us, through the public interest litigation, we are taking a huge stride to register their voices so that their voices is heard by the administration, heard by the judiciary, heard by all the persons who have a stake in the democracy. And the number of public interest litigation have been taken by the Odisha High Court, and we are just following those public interest litigation. Madam, we are really delighted, and with this delight I will just urge all the young lawyers, because they are the future judges, they are the future judicial officers, they are the future senior advocates who will guide the High Court. Come forward with a sense of the service to the community. If you excel in your profession, you must understand this is a service in the community, because we talk about the quality service through this institution. As a judge, we are always humbled by your erudition when you just display about any law, interpret a law. So far, I tell you, the history of judiciary was in a small paragraph in the history books of the country. But with the change of time, with our tryst with the Constitution, we have taken a major part of this history. And that is why when we are holding the National Conference on the Judicial History, there is so much of interest from the historians. What is happening with the judiciary? What is there in the judicial record? Earlier that was not there. That was our history has been reviewed, relooked into through the judicial records. Lot of unknown histories. The histories of the freedom fighter in the state of Orissa are coming up through the judicial archive and the Museum of Justice. You will see how this entire Orissa has contributed to the freedom movement of this country. And I must also remember the people like Madhusudan Das, who was in the forefront of the social reformist movement for advancement and development of the Oriya nationalism. I pay my deep regard in this occasion. They are the torch bearers of the movement of the High Court. I am not the part of the state, but during a small years I share every emotion of this state because I feel I am part of this community. So this is an occasion I have perhaps unnecessarily consuming time. I have been given the duty of giving the vote of thanks. And I stand here for the entire High Court, which is comprised of the judges, lawyers, and our
officers and the staff. Honorable President, we have no words. The way you have found out time for this High Court to be present in this occasion, no words is sufficient to express our gratitude. Mahamahi Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Akina Adigono Mano, Kami Harabagi Kate, Tehen Ale Ten, Oktakin M. Aka, Oneto Ali Hai, High Court Pahata, Kon Adi, Ayoma Sarhole Chal Akin Kana. It's a deep regards to the Honorable the President, and I share everybody's the warm reception for her. I hope the Odisha High Court will continue to get her support in the various projects, and whenever we'll seek her blessings that will be bestowed upon us. Then our very dear is a man of knowledge, Honorable Governor, Professor Ganeshi Lal. Sir, we bow down that you have also made this occasion for us, and your presence always electrify us with various new thoughts. Today also you have spread the new seeds of thoughts to us. We think it will be grow up in our exercises. Now, Sri Jagannath Sarkar, Honorable Minister, Law, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development and Minorities, Backward Class Welfare, Government of Odisha. I was really touched by his simple words and his aspiration from the judiciary and the praises he made for the Odisha High Court. I deeply oblige, sir, for your such good words of knowledge. Then I must thank Sri Ashok Kumar Parija, Advocate General. I must say the dynamic Advocate General, who is showing the light to the young lawyers. We are grateful to you, sir, for being present here. And our own captain, I told her captain, because I am from the bar, Sri Dharanidhar Naik, is a part of this celebration. Notwithstanding them, sir, we are grateful for your presence and made it the occasion very successful. And I also place my heartfelt thanks to my brother and sister judges of this High Court who had taken so much of initiatives to make this program to this level. Our former respective judges who are sitting this part, I place my deepest regards because they lift the foundations of this High Court and every day it is advancing. Senior advocates, those are the leading light of our profession, of our institution. I pay my deepest respect for them, and I also urge them to come forward in future to make this High Court as an institution of national importance so that entire nation look at the Odisha High Court. You can do this. My young lawyers, brothers and sisters, your presence, your company, your celebration, we are all part of that. Thank you all. And a special thanks from this High Court to the Central Postmaster General Odisha Circle, Sri Shubhendu Saini, who has taken a special initiative to publish this commemorative stamp on the celebration of the establishment of 75th years of the Odisha High Court. The learned office bearers and members of the High Court Bar Association, in particular, I thank you all for your active participation in celebration of this occasion.
and my dear the Registrar General, registrars, and all the employees. I look them, they are sitting there. They are the backbone of any program of the High Court. I place my deep regard for them. I hope they will continue to do the good work in future also. Ladies and gentlemen, the invitees, we are all grateful to you for giving this celebration a different meaning by your presence. Thank you all. Thank you. Thank you, my lord. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. A hearty good afternoon to one and all. Today is a red-letter day in the history of Sri Ramachandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack. It is our honor and privilege to have with us Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Professor Ganeshi Lal, Honorable Governor of Odisha, Sri Niranjan Pujari, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Odisha. On behalf of entire SCB Medical College and Hospital, Cuttack, I extend a warm welcome to all the dignitaries to the annual function celebrations Aurora 2023. May I now request all the dignitaries to kindly proceed towards lighting the holy lamp. Shuklambaradharam Vishnu Shashivar. Talented students of SCB Medical College. This year, the theme of the event is Aurora, means exotic lights. Thank you again, Your Excellency, for lighting Aurora and making your presence illuminate this function. The essence of this present will linger on for many, many decades to come. Thank you. I now request Professor Dr. Sudhanshu Sekhar Mishra, Superintendent, SCB Medical College, to kindly felicitate Honorable Governor of Odisha, Professor Ganeshi Lal. May I now request Professor Dr. Banavihari Mishra, Vice Principal, SCB Medical College, to kindly felicitate Honorable Minister, Health and Family Welfare, Odisha, Sri Niranjan Pujari. Thank you. In commemoration of this function, we have published a souvenir. May I now request Honorable Governor of Odisha, Professor Ganeshi Lal, to kindly do the honor of releasing the souvenir. I request Honorable Governor to present a copy of the souvenir to Honorable President. Thank you. May I now request Sri Niranjan Pujari, Honorable Minister,
Health and Family Welfare, Odisha, to deliver his speech. ओडिशा माटीर गर्व गौरव महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, गुरुदेव महामहिम राज्यपाल डॉक्टर गणेशीलाल महोदय, सम्मान्य सम्मानास्पद डीन प्रिंसिपल महांती डॉक्टर महांती सार महोदय, सुस्थ और निरामय जीवन समस्तंकर काम्य। ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्रींकर भाषारे प्रत्येकटी जीवन मूल्यवान, पीपल आर मास्टर एवं समस्तंकर जीवन आमर बंचेबार कर्तव्य अच्छी, तेणु समस्त जीवन मूल्यवान अटे। यही उक्ति को साकार करने को हेले स्वास्थ्य सेवा को सार्वजनीन समोपयोगी समुन्नत और सुलभ करने एकांत जरूरी अटे। से ओडिशा राज्य सरकार विगत 2 दशंधि मध्य स्वास्थ्य सेवार उन्नति को सर्वाधिक गुरुत्व देइछन्ति और जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में स्वास्थ्य परियोजनार सफल रूपायन सांग को अंतर्जातीय मानर निजस्व अभिनव योजना प्रणयन करिछन्ति, जहाँ ओडिशा को सारा विश्व में सफलता और प्रशंसा आनी देछि। राज्य में आवश्यकता ठारू कम संख्यक मेडिकल शिक्षा प्रतिष्ठान थिबा जोगु डाक्तर, पारामेडिकल कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर आदिंकर घोर अभाव परिलक्षित हेउथला। सेथिपई प्राथमिकता भित्तिरे गत 10 वर्ष रे 8टी नवा मेडिकल कॉलेज और 2टी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापन, नर्सिंग स्कूल गुड़ी को कॉलेज रे रूपांतरण, ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा आदि काम युद्धकालीन भित्तिरे समाप्त होइछि। यार सुफल स्वरूप 2000 मसीहा तुलन में विभिन्न वर्गर स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी संख्या जे केवल आशातीत भाव बढ़ी ताहा नुहे, बरं उन्नत स्वास्थ्य सेवार वास्तव विकेन्द्रीकरण माध्यम रे राज्यर लोकों को घर पाखरे समस्त सुविधा उपलब्ध होउछि। ओडिशा रे 2000 मसीह मात्र 321 MBBS डाक्तर एवं 224 जन विशेषज्ञ डाक्तर बाहरु थिबा बेले वर्तमान ताहा यथाक्रमे 2200 और 826 को वृद्धि पाई। डाक्तर आवश्यकता दृष्टि संप्रति ओडिशा एक बड़का राज्य रे परिणत होइछि एवं 2023 डिसेम्बर सुधा राज्यर समस्त डाक्तर पदवी पूरण कराइबार लक्ष्य रखा जाइछि। सार्वजनीन स्वास्थ्य सेवा को आहुरी लोकाभिमुखी करने उद्देश्य रे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना माध्यम रे सरकारी स्वास्थ्य अनुष्ठान मानकरे समस्तंक पई निःशुल्क सेवा जोगाई दिया बेले राज्यर 96.5 लाख परिवार 3.3 कोटी अधिक उपभोक्तांक पई राज्य तथा राज्य बाहर 700 प्रमुख तथा नामकरा घरोई चिकित्सालय रे पुरुषंक पई उद्दिष्ट 5 लाख टंका और महिला मानक पई 10 लाख टंका मूल्यर चिकित्सा उपलब्ध करा जाइछि। एथिपाई प्रति मासरे प्राय 225 कोटी टंका मूल्यर सेवा पाखापाखि 1 लाख रोगी पाई पारुछंती। मेडिकल कॉलेजर स्वास्थ्य सेवा एवं राज्यर कलाहांडी, नुआपड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी भली उपांत जिल्ला रे उपलब्ध हेउची। मान्यवर मुख्यमंत्रींकर उद्यम रे वायु स्वास्थ्य सेवा मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा अधीन रे मेडिकल कॉलेजर विशेषज्ञ डाक्तर मानकु उड़ाजहाज जोगे नहीं संपृक्त जिल्लार मुख्य चिकित्सालय उन्नत मानर सेवा जोगाई दिया जाउछि। 5T व्यवस्था उपरोक्त समस्त कार्य को सुसंहत समयोजित वैषयिक ज्ञान सम्मत और स्वच्छ करने जोगों ओडिशा सुस्थ और सुखी हेबा दिगरे आगे चली। राज्य समग्र देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु हार ह्रास, द्वितीय सर्वाधिक मातृमृत्यु हार ह्रास, सर्वाधिक टीकाकरण, सर्वाधिक मलेरिया नियंत्रण, द्वितीय सर्वाधिक जखमा नियंत्रण आदि क्षेत्र में सफलता अर्जन करि पारिछि। समस्त जिला चिकित्सालय रे डायलिसिस सेवा उपलब्ध होइछि। ओडिशा को उभय जातीय और अंतर्जातीय सम्मान सह छुटी। आम प्रिय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन रे
एससीबी मेडिकल कॉलेज रो सर्वांगीन उन्नति पाई सरकार समस्त प्रकार उद्यम जारी रखिछंती। एससीबी मेडिकल कॉलेज मु आपण मानकर जानिबा पाई अवगति निमंते कही रखुची जे यही अनुष्ठानटी लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट भाव में ओडिशा रे अछि। यह ओडिशार सर्वपुरातन अनुष्ठान कहा जाए। मराठा समय यार आरंभ एवं प्रगति पथरे धीरे धीरे आगभर ही एबे आमर एम्स प्लस पर्यंत पहुँचवा उपरे अछि। थरे जदि कौनसी रोगी एससीबी मेडिकल रो बाउंड्री भीतर को आसीगला मोर हिसाब रे तार भावना हो जाए जे निश्चय मोर जीवनटा बंची जीव। एवं यही अनुष्ठान केवल ओडिशार नुहे सारा भारत वर्ष रे नाम करिछि, नाम अर्जन करिछि। एवं यही अनुष्ठान रु पाठ पढ़ी बाहरी थिबा फैकल्टी बा स्टूडेंट सारा पृथ्वी रे ना करिसंती एवं ओडिशार गर्व गौरव बढ़ाइछंती, जहा द्वारा जनसाधारण को विश्वस्तरीय मानर स्वास्थ्य सेवा यही अनुष्ठान रु जोगाई दियाई पारुछि। वर्तमान 4टी नूतन हॉस्पिटल बिल्डिंग कार्य आगे चली। एथिरे मेडिसिन स्वतंत्र सर्जरी और साधारण सर्जरी और ट्रमा केयर पई 2058टी बेड्र सुविधा हेबो। यही 9 ताला विशिष्ट बिल्डिंग रे प्रत्येकटी रे हाराहारी 500 बेड उपलब्ध हेबो। छात्र छात्री मान रहिबा सुविधा पई अतिरिक्त 5टी बिल्डिंग निर्माण हेबो। एथिरे छात्री मान पई 2टी और छात्र मान पई 3टी हॉस्टल उद्दिष्ट रहिबो। एथिरे सर्वमोट 2244 रूम सहित 34टी गेस्ट रूम मध्य रहिबो। या सहित मेडिकल कॉलेज रो कर्मचारी मान पई आवश्यक बासगृहर मध्य निर्माण कराजिबो। राज्य रे निया जाइथिबा 5टी आभिमुख्यर सुफल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे मध्य बेस परिदृष्ट होइछि। एससीबी मेडिकल कॉलेज को एम्स प्लस रे रूपांतरित करबा ठारो आरंभ करी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अधीन रे स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान और मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा आदि विभिन्न अभिनव जनहितकारी सेवा स्वास्थ्य द्वारा क्षेत्रर नूतन अध्याय सृष्टि करिछि। मो आज जो बंधु माने मते सुजोग देइछन्ति आपन पाखरे एही ऐतिहासिक मीटिंग रे द्विपद कहवा पाई सेमानंकु तथा डीन को एवं ऑल दी फैकल्टीज एवं मोर आदर छात्र छात्री एवं समस्त सम्मान्य डॉक्टर मानंकु मोर गभीर हृदयर गभीरतम प्रकोष्ठरू मु कृतज्ञता ज्ञापन करुची। धन्यवाद समस्त को नमस्कार करुची। वंदे उत्कल जननी। Thank you, sir. May I now request Honorable Governor of Odisha, Professor Ganesi Lal, to deliver his speech. Jagannath Swami Nayan Pathagami Bhavtumi. Honorable President of India, a living goddess, Honorable Dr. Prasannajit Mahanti ji, Honorable my friend Minister in the government, Niranjan Pujari ji, dignitaries, celebrities, eminence, elegance and excellence of the society, the scientists of the human constitution, rejuvenating the disorders and disharmonies in the body, being in the capacity of a soldier, once you prescribe medicines, in the capacity of a psychiatrist, once you treat the mind, and in the capacity of a priesthood, once you treat the soul in the person, you say, accept my salutations, Juhar, Pranipat, Namaskar.
Once there was a congregation in Pondicherry. Sri Aurobindo was sitting there. The devotees were sitting in front of him. And one devotee puts a question. Why the need of hospitals? Why the need of doctors? Why the need of all such things when Lord Jagannatha is there, you see? Such a question was floated to Sri Aurobindo by his disciples, by his devotees. Then Sri Aurobindo replies, rubbish. There is divine grace and the divine force. This universe is a play of forces. The divine employs his divine force to rejuvenate the disorders and disharmonies in the body, you see. And the divine force invites the divine grace. इसीलिए कागज पर RX लिखते हैं doctors. And the divine comes to help them. So this is the game of the Lord Prabhu Jagannatha. That is what was given to this. Now since scientist of human constitution, which is regarded or which is called as a doctor, you see, he is the divine force of Lord Prabhu Jagannatha. He works in the capacity of a soldier, psychiatrist, and the priest also. Now once he is the divine force, then of course he has a broad mind, inexhaustible energy, unflinching will, quiet and steady determination, total trust in the mission. Once I say that he has a broad mind means no boundaries, no borders, no barriers, no banners, no bondages, no hierarchy, no dominance, no authority, no caste, no creed, no color, no cunningness, no colorless, no conventions, no confusions, no aversions, no attachments. Well, doctor has a broad mind, you see, because he is the divine force of the Lord, you see. I should put it in simple words, you see, the 5 petals of a lotus, you can say, open, he's frank, he's equal, he's generous, he's kind. Soul's ethereal firmament, he's. Again, I would like to put in the words of J. Krishnamurti, he's humble, courteous, patient, considerate, and disciplined. Well, that is what perhaps has been defined to be a perfect doctor, you see. Therefore, in my opinion, hospital means hospitality. And ICU means I am connected to you. The doctor is a patient, you see. Unless the doctor becomes a patient himself, you see, whom he is treating, he can't treat the patient. So I am in you as you are in me as me. Well, that is called, therefore, Lord Krishna, Lord Jagannatha speaks to Arjuna, Mukta Sango Anamvadi Dhriti Utsaha Samanvitaha. Devoid of all dualistic character, free from egoist culture, full of zeal and enthusiasm. Even he doesn't bother about his family, you see. I have known doctors, they don't meet even their wives, you see, till midnight and even after midnight, see. That is what has been there. So that is called that a doctor is always couched in transcendence, you see. He is the servitor of Lord Prabhu Jagannatha because he knows that Lord Jagannatha dwells in him. Vande Utkal Janani Bharat Mata ki jai. Thank you. Ladies and gentlemen, may I now request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to kindly address the gathering. पंचासीन ओडिशार राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, ओडिशा सरकार को स्वास्थ्य मंत्री श्री निरंजन पुजारी जी, श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज डीन तथा प्रिंसिपल डॉक्टर प्रसन्नजीत महांती जी, महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका, डॉक्टर, नर्स तथा अन्यान्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद,
श्रद्धेय छात्र छात्रीगण, पुरातन छात्र छात्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सजन मंडली समस्त को नमस्कार, जोहार। श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वार्षिकोत्सव अरोरा 2023 रे योगदान करी मु विशेष आनंदित। यही अवसर से एक स्मरणिका उन्मोचित होगा मध्य आनंदर कथा। एथिपाई मु आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी। यह पूर्वर आज ओडिशा हाईकोर्टर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित उद्यापनी उत्सव में मु जोग देछि। कटकर प्रसिद्ध पाई ओडिशा उच्च न्यायालय, रेभेन्सा विश्वविद्यालय एवं एससीबी मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण अवदान रही। मु जानिबा को पाइली जे मराठा राज्यस्थ समय रे एही स्थान रे गोटे पिलग्रिम हॉस्पिटल थिला। कहा जाए हॉस्पिटल टी मुख्यतः रथयात्रा पाई पुरी जाउथिबा तीर्थयात्री मानकर आशु चिकित्सा निमंते उद्दिष्ट थिला। ब्रिटिश समय रे यह ओडिशा मेडिकल स्कूल एवं परवर्ती समय रे ओडिशा मेडिकल कॉलेज रे परिणत होइथिला। मु जानी खुशी हेली जे एही मेडिकल कॉलेज रो प्रतिष्ठा क्षेत्र रे उत्कलर बरपुत्र, उत्कल सम्मेलन प्रथम सभापति, मयूरभंज दानवीर महाराज श्रीरामचंद्र भंज देवंकर अवदान थिला अतुलनीय। सेतिपाई स्वाधीनता परे श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय भारे यही अनुष्ठान पुनर्नामित हैला। ये अवसर में स्वर्गत महाराजा प्रति मु गभीर श्रद्धांजलि एवं भक्तिपूत अर्पण करुछि। अध्यापक अध्यापिका वृंद, चिकित्सकगण, छात्र छात्रीगण, एक छोट पिलग्रिम हॉस्पिटल आरंभ होई यह आज भारतर अन्यतम अग्रणी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे परिणत होईछि। मु जानिबा को पाइली जे केवल ओडिशा रे बा पूर्व भारत रे न सारा देश रे एही अनुष्ठान ख्याति रहिछि। सब वर्ग लोकंकु एठारे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हेउछि, जेउथिपाई यह सर्वसाधारण आस्थार केन्द्र पालटिछि। ओडिशा व्यतीत पड़ोशी राज्य रोगी माने एठाकु आसंती बोली मध्य मु जानिबा को पाइली। यह एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो डाक्तर मानकर स्वास्थ्य सेवार उत्कृष्टता एवं निष्ठा को दर्शाउछि। आपण माने यही परंपरा को अब्याहत रखिबे बोली मु आशा पोषण करुछि। यह एक सर्वभारतीय अनुष्ठान एवं यह को भारतर विभिन्न प्रांतरू छात्र छात्री माने आसी अध्ययन करछन्ति। यह द्वारा भारतर विविधता सहित परिचित हेबा सेमानंकु एठारे अवसर मध्य मिलुछि। विविधतारे परिपूर्ण एक देश भारत सारा पृथ्वी सुपरिचित। मोर तो मन हो एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गोटे मिनी इंडिया। एठारे अध्ययन करुवा छात्र छात्रीगण भेषज विज्ञान विषय रे ज्ञान अर्जन करने संगे संगे आम संस्कृतिर अनन्यता विषय रे मध्य शिक्षा लाभ करुथिबो बोली मु आशा पोषण करुछि। छात्र छात्रीगण आज तुम्हें मेडिकल पढ़ुछ, काली तुम्हें डाक्तर होई बाहरिब। मो विचार डाक्तरी गोटे वृत्ति नुहे, यह एक व्रत। माँ माने जेपरी गोटे उद्देश्य नहीं व्रत रखि थांती, पिला माने डाक्तरी हेबा परे तांकर जो उद्देश्य तांकर जो व्रत को से माने धारण करथांती एवं जीवन सारा ताको अनुपालन करती। सेतिपाई डाक्तर माननको मु मोर वक्तव्य रे भी बहुबार कहिछि डॉक्टर, टीचर एर लॉयर एमानको गाँ गहरे भगवान मानती। भगवान को आमे देखिना, भगवान को आमे विश्वास करुछु, किंतु चलती जो भगवान जो जीवन दान करती तेणु डाक्तर को मानी थांती।
सेवा प्रति आंतरिकता नथिले, समाज प्रति प्रतिबद्धता नथिले बा दुखी मनीषर आखिरु लुह पोछिदेवा पई मन भितरे प्रेरणा तो नथिले जड़े भल डाक्तर हो पारिबनी। डाक्तर तांको पाठरे प्रवीण हेवा सहित तांको मनरे लोकमानक प्रति दरद थिबा आवश्यक। भारतीय संस्कृति रे नर सेवा को नारायण सेवा बोली कहा जाउछि। पीड़ित लोकंक जंत्रणा को मुक्त करने ठारू आरंभ करी तांकर दुख दुर्दशा को दूर करने सबुठारु बड़ काम। शासक, प्रशासक, इंजीनियर, अध्यापक एमाने दुखी लोकंकर सेवा करि पारिबे किंतु काहाकु जंत्रार मुक्त करि पारिबे नै। अन्य मानक तुलना रे एहा ही डाक्तरी वृत्तिर स्वतंत्रता। मुनि ऋषि माने कहिसंती न तहं कामेय राज्यं न स्वर्गं ना पुनर्भवं कामेय दुःखत तानि प्राणनां आर्तनाशनम। तुम मैंने जिते शिक्षा समाप्त कर डाक्तर हेब यही दुखी लोक मानकर आर्तनाशन शपथ नहीं कार्य करने उचित। स्वास्थ्य सेवा जे कौन सी समाज में गुरुत्वपूर्ण। शिक्षा और स्वास्थ्य उभय समाज गठन आधारशिला। आपण माने जानिछंती देश स्वाधीन होला बेलू भारतीय मानकर हाराहारी आयु थिला मात्र 32 वर्ष किंतु वर्तमान भारतीय मानकर हाराहारी आयु 70 वर्ष रे पहुंची। ये केवल आपण मानकर साधनार ही फल। देश में मातृ मृत्युहार और शिशु मृत्युहार बहु परिमाण रे ह्रास पाई। पूर्वर विभिन्न महामारी रे बहु संख्यार लोक मृत्यु मुखरे पड़ुथिले। भेषज विज्ञान अग्रगति आपण मानकर निष्ठा एवं सरकार प्रचेषा बल वर्तमान अनेक महामारी को नियंत्रण करने को आमे सक्षम होइछु एवं अनेक बहुमूल्य जीवन को आमे बंचाई पारुछु। सजन मंडली एक अजणा वैश्विक महामारी आज अकस्मात पहुँची जीव बोली कहीं केबे कल्पना कर नथिला। कोविड-19 विज्ञान विकसित विश्व को दोहलाई देला। महामारी भयंकर रूप ये पृथ्वी देखिला किंतु मु धन्य कहबी भारतर चिकित्सक वृंद एवं चिकित्सा सहित संपृक्त कर्मचारी मान निज जीवन को एवं निज परिवार को उपेक्षा करी आपण माने जेपरी अन्य मानकर जीवन रक्षा करिया को आगे आसिले ताहा वास्तविक अति प्रशंसनीय। चिकित्सा सहित आपण मानकर गवेषणा मध्य समांतराल भाव में चलिला। फल भारत निजर ज्ञान कौशल वैक्सीन तैयारी करने को सक्षम है। आमे समस्ते जानिछंती भारत वर्तमान सुधा 2220 कोटी रु अधिक डोजेस ऑफ वैक्सीन दे पारी जहाँ एक विश्व रेकर्ड हो पारी। देशवासी को टीका देवा सहित पृथ्वीर 100 रु अधिक देश को भारत टीका पठाई। विश्व चकित है जे भारत परी एक विशाल विकासशील देश राष्ट्र कोविड-19 को एते सफलतार सहित मुकाबला किपरि कला। ये क्षेत्र में भारत सरकार निष्ठा मार्गदर्शन निश्चय प्रशंसनीय। महामारी सामना करने दिगरे चिकित्सक कूलर अग्रणी भूमिका रही। स्वास्थ्य सेवा सहित जड़ित नर्स एवं पारामेडिकल स्टाफ मानकर भूमिका मध्य ऊणा नुहे। तेणु डाक्तर भावी डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी माने जेते प्रशंसा कले भी ये यथेष्ट हेब नहीं। भारतर अनुभवी नेतृत्व महामारी सामना करने संगे संगे देश को अर्थनैतिक विपर्यय मध्य रक्षा कर पारी। भारत आज विश्वर 5म बृहत अर्थनीति भाव में उभा होइछि एवं यह 3य बृहत अर्थनीति परिणत होगा बोली आशा करा जाउछि। वर्तमान भारत प्रति विश्ववासी दृष्टिभंगी बदली जाइछि। आम देश अधुना विश्व समस्या समाधान दिगरे अग्रणी नेतृत्व नेउछि। यह आम समस्तक एक गौरवर विषय। यह द्वारा आम युवपीढ़ी निज भितर एक आत्मबल खोजी पाइछि एवं निज देश और निज संस्कृति उपरे अदम्य आस्था प्रकट करुछि। छात्र छात्रीगण मु आशा करुछि आग अपेक्षा निज उपरे तुम मानकर आस्था निश्चय भाव में बहुत परिमाण बढ़ी जाइछि।
ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି କେବଳ ଭାରତ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ସୁନାମକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କେତେକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରୟ ପୁରସ୍କାର, ଶାନ୍ତିସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟନାଗର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ